हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आम प्रीवियस वीडियो कौन स्टडी करते ना बोन कौन बोन फंक्शन कौन एबे कौन देखा ना क्लासिफिकेशन बोन बोन को केतरा बहुत क्लासिफिकेशन कराई। फास्ट ए रे देखे ना अकॉर्डिंग टू द बोन शेप जाऊँ फास्ट है लॉन्ग बोन कौन इज लॉन्ग बोन एज द एलोंगेटेड शेप डायफेसिस एंड टू एक्सपेक्टेड एंड एपिफेसिस व्हिच आर द स्मूथ एंड आर्टिकुलर। लॉन्ग बोन हूँ the shaped as typically three shape separated into three border, three central medullary cavity and a neuroscent foramen directed away from the growing the end. Example typical long bone as humerus, radius, ulna, femur and tibia and fibula. Long bone corner, each long bone has elongated shaped diaphysis and two expanded end होची epiphysis. गोटे रहिबा तारा शेप्ट रहउची शेप्ट diaphysis epiphysis which are the smooth and articular. The shaft is three surface separated of the border central medullary cavity. Typical long bone and humerus, radius, ulna, femur, tibia and fibula. Miniature long bones have the only epiphysis like metacarpal, metatarsal and phalanx, and modified long bone have no medullary cavity and like cavity is a figure 2.0. ये देखो ये सब एमती का बोन ओके हेड रहा हेटा रहा एपिफिसिस डायफिसिस एमती सब रहा ओके एमती का बोन तापर गला तापर शॉर्ट बोन को देयर शेप यूजुअली क्यूबॉइड कुनेफॉर्म ट्रापेजॉइड स्कैपॉइड एग्जांपल टार्सल एंड मेटाकार्पल बोन ये सब होची शॉर्ट बोन रहा कौन ना क्यूबॉइड कुनेफॉर्म ट्रापेजॉइड स्कैपॉइड टार्सल कार्पल ओके तो रहा फ्लैट बोन कौन होची रिजेबल शैलो पार्ट ऑफ द फोर फ्रॉम बाउंड्री सर्टेन बॉडी कैविटी एग्जांपल बोन ऑफ द हाउट ऑफ स्कल रिब एंड स्टर्नम स्कैपुला ये होची कौन ना फ्लैट बोन. Irregular bone कौन ना vertebra hip bone and bones in the base of the skull vertebra and hip bone ये होची irregular bone. Pneumatic bone certain irregular bone contain large air space near the epithelium example maxilla, sphenoid, ethmoid etc. They make the skull light and weight, help the resonance of the voice and act as air conditioning chamber and inspire air. Okay, sesamoid bone कौन ना now these are bone in the nodules found embedded of the tendon and joint capsules. They have no peritoneum and ossicity after birth. They are related to articular and non-articular bony surface. And the surface contact are covered with the hyaline cartilage, lubricated bursa and synovial membrane. Patella pisiform function of the sesamoid bone is resistance pressure, minimize friction and alter of the direction of the pulled muscle and to maintain the local circulation. ओके देखो एमती का बोन रोचे सब ये हूँ क्लाविकल बोन जो ना हूँ फ्लैट बोन ये हूँ कुनेफॉर्म लुनेट कार्पलेट ट्रापेजियम स्पेसिफॉर्म हेमेट मेटाकार्पल कार्पल यहाँ हूँ हेड गेटर ट्यूबरकल लेजर ट्यूबरसल एंटेरियर बॉर्डर डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी लैटरल सुपरकॉन्डाइल रिच लैटरल एपिकॉन्डाइल एपिथेलियम सब रहा बोन. ओके थैंक यू. जय श्री राम. जय हिंद. सपोर्ट करूँ लाइक करूँ.